So today we cover our next module. We see shortcuts of Excel and also if time permits, we cover filter functions also in today's class. Okay, everyone. So whatever things I'm going to teach you, implement in your Excel file in your data. Everyone tell that you got your data. Mandira ma'am, please share the data in this group also. I hope everyone you got the data after class. So till then you see and how I implement it. So everyone tell that if you are Excel expert, then no need to touch or use mouse, right? I'm right or wrong? Unmute yourself and please tell me. Everyone said that if you are Excel expert, then no need to touch or use mouse, right or wrong? Yes, ma'am, right. Okay, so definitely we are going to start this session with shortcuts. Even I'm not saying that you need to remember all shortcuts. You just try and find what are the shortcuts in day-to-day life you are using. Keep in your mind. Okay, so I will share my screen. So this is our data for our today's practice. And everyone, you got this data after the class. Please implement it in your Excel or in your system also. Whatever thing I'm going to teach you in today's class, you also did it practically in your system. Okay, then only you will be able to learn Excel. First of all, we cover navigation key. See, I am on this cell. What this cell represent? Can anyone tell me what is this cell represent? What is the identification for this cell? Please speak a little bit loud. I'm not able to hear you. Please speak. This is the what is the identification for this cell? For this cell, identification is A4. A is our column name and fourth is our row. So what is the identification for this cell? A4. Okay. See, I am on this cell A4. If I want to move right side, so what is the general approach for this? With the help of mouse or with the help of key? With the help of mouse, what we do, we right click on this cell and drag it like this. But we are talking about shortcuts. So this is not right way. For moving, what we need to press control with right arrow. So it move me on last active cell. This is B4. When you want to select, then you need to अभी इसने क्या किया कि मुझे A4 से B4 में मूव कराया मेरे लास्ट एक्टिव सेल में मुझे लास्ट कॉलम पे क्यों नहीं लेके गया बिकॉज वी हैव वन ब्लैंक कॉलम आफ्टर बी कॉलम वी हैव वन ब्लैंक कॉलम सो जहां ब्लैंक से पहले जो हमारे पास एक्टिव कॉलम था उसने मुझे कहाँ लीव किया उसने उसको ऑर्डर आईडी पे लीव किया इफ आई वांट टू सिलेक्ट इट देन व्हाट आई नीड टू press control shift with right arrow. Now you notice change is there. When I press only control with right arrow, then I only move. But this time I select the two columns. Now when I scroll down, so this is for side moving. And if I want to
select downward. So what we need to press? Control shift down arrow. अब इसने क्या किया? अब भी हमें यहाँ पे क्या किया? बीच में हमारे पूरे डाटा को सिलेक्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज वी हैव वन ब्लैंक रो देयर. 12th row is blank. So if I move downward, so see, I am not able to see what is the header here. So अगर मुझे कोई भी अपना कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है तो मुझे कंफ्यूजन होगा कि किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में प्राइस है, किस कॉलम में ऑर्डर डेट है या किस कॉलम में शिप डेट है. तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट वे क्या है? सबसे पहले अपने डाटा को क्या करना होता है? जो रो हमारा कॉलम हेडर होता है उसको हमें फ्रीज करना होता है. Yes, ma'am. यस. तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारा सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. किसके कारण नहीं हुआ? क्योंकि वी हैव blank row and blank column in our data. So whenever you work on your Excel, first of all clean your data. No blank value is there, no blank column is there in your data if you want accuracy in your data. Got it, everyone? Yes, ma'am. Now you can see we have two yellow section. I want to delete this yellow highlight section. Generally what we do, we select the column and right click on our column and delete it. This is the general approach, but we are talking about shortcut. So what you have need to do, press anywhere in your column, select any cell of your column and press control plus space key. See, your column is selected. Now press control minus. Blank column is now not visible. So with the help of control plus space key, we select anything. With the help of control plus space key, we select column, and with the help of shift plus space key, we select row. Note it in your notepad for future. Now we see one row blank is there also. So what is the general approach? We select the row and right click and delete it. But we are looking for shortcut here. So what we do, we select any cell of the blank row and press shift plus space key. My row is selected. Now press control minus. Ma'am, please repeat. Okay. See, press anywhere in your blank row. Select any cell of your blank row, and what you need to press shift plus space key. Shift plus space key and press control minus. What control plus minus will do? It will delete whatever you have selected. It is not for column, not for row. Whatever you selected, control plus minus will remove it, delete it. Okay. I think now you are able to know what control plus minus do and what shift plus space key do, right? Note it, everyone. It's all about deleting the row and column. For adding, we have control plus shift. If I want to add one row, so what is my approach is there? Control plus shift plus icon. Now, if I scroll down, see how many blank row is there. 11th row is blank. Then 28th row is blank. Then 61. अभी क्या है? अभी हमारे पास जो डाटा की क्वांटिटी है वो मे बी इतनी ज्यादा ना हो, बट इन फ्यूचर जब भी हम रियल इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तब क्या होगा कि हमारे पास क्या हो सकता है? डाटा बिलियंस, ट्रिलियंस, मिलियंस में होगा. जब हम वहां जाके क्या करते हैं कि मैनुअली ब्लैंक रो, ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं और इतने सारे डाटा पे हम मैनुअली चेक नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द अप्रोच फॉर? प्रेस कंट्रोल जी इन एनीवेयर इन योर डाटा. प्रेस कंट्रोल जी. We have one pop-up is there on our screen. My screen is visible. Yes, ma'am.
So we have one pop-up is on my screen. There is one dialog box facial. Click on it, and what we are looking for? We are looking for blanks. So click on blanks and press OK. When I hit on enter, see my process is going on. Wait for 1-2 seconds. Now what? See, my every blank row is selected. 28th row is selected. 61 रो सिलेक्टेड. इसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली क्या किया, सारे ब्लैंक वैल्यूज, अगर हमारे पास अगर ब्लैंक कॉलम भी यहाँ पे हमारे डाटा में अवेलेबल होता तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता. कंट्रोल प्लस जी में हमने क्या किया, ब्लैंक को सिलेक्ट किया, तो उसकी हेल्प से हमें क्या हुआ कि हमारा सारा ब्लैंक डाटा अब सिलेक्ट हो गया. अब हमें इसको रिमूव करना है अपने डाटा से. तो रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए मैंने आपको अभी एक शॉर्टकट कमांड बताया, दैट इज कंट्रोल माइनस. जब आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो इस टाइम हमारे स्क्रीन पे एक पॉपअप फिर से आया. इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है: शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम. ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा ये रो डिलीट होगा उसके नीचे जो डाटा है वो कहाँ एडजस्ट होगा, सेल्स के लेफ्ट में, सेल्स के अप में या इंटायर रो में. तो हमें क्या करना है, शिफ्ट सेल्स अप, कि उनको ऊपर एडजस्ट कर दिया जाए. शिफ्ट सेल्स अप. Now our data is clean. So what we do, first of all we freeze our headers here. अभी एक डाउट, अगर आप स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट आई हैव वन डाउट. इफ इन माय टेबल देयर आर 50th कॉलम, तो क्या मैं उसको मैनुअली सिलेक्ट करूंगी? नहीं. नेविगेशन के लिए मैंने आपको कौन सा कमांड बताया? प्रेस फॉर सिलेक्शन, बट वी नीड टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट विद राइट एरो. तो मेरे क्या हुआ, मेरा सारा कॉलम हेडर सिलेक्ट हो गया. अंडर व्यू टैब यू हैव वन ऑप्शन फॉर फ्रीज. सी, अंडर व्यू टैब you have one option for freeze. When I click on freeze panes, there 3 option is there. freeze panes. पेन्स में क्या होता है, जब हम पूरा फ्रीज पेन करते हैं तो क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स विजिबल. फ्रीज पेन में हमारा पूरा क्या होता है कि पूरा फ्रीज होता है. जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारा डाटा मूव नहीं होगा, वो फ्रीज हो जाएगा एक ही जगह पे एज एन स्टैचू. बट we don't want it. We look for freeze top row. This is available in second option, freeze top row. What freeze top row? Keep the top row visible while scrolling through the rest of the worksheet. अगर हम अपनी टॉप रो को फ्रीज करते हैं और जब मैं अपने अगर 100th रो में भी होंगी तो अभी क्या होगा, मुझे मेरी फर्स्ट रो वहां पे मेरे डाटा में विजिबल होगी, जिसकी हेल्प से अगर मुझे नीचे अपने डाटा में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो मैं इजीली कुछ भी अपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती हूँ. तो आई क्लिक ऑन फ्रीज टॉप रो एंड फॉर फॉर्मेटिंग आई गिव कलर. See, now I scroll down, but my first row is freeze in my screen. Got it? Yes, ma'am. Okay. In our previous class, we covered the concept of quick access toolbar, right? Yes, ma'am. Yes. Here I cover one topic also. Whenever, जैसे कि हमने क्विक एक्सेस टूल बार में क्या किया था, कमांड को कस्टमाइज किया था हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हम जो जैसा कि हमें चाहिए था. बट इस टाइम हम क्या करेंगे कि एक कंसेप्ट है दूसरा, सेम वे में वर्क करता है, बट इस टाइम क्या होगा कि हमें क्विक एक्सेस टूल बार से कमांड को सिलेक्ट नहीं करना होगा, हमें नंबर्स की हेल्प से करना होगा. जब भी हम हमारे पास डाटा है, हम ओल्ड प्रेस करते हैं, प्रेस ओल्ड. तो सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एस एच एन हर के लिए एक लेटर शो हो रहा है. यहाँ पे देखो, जो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन के लिए 6 यूज हो रहा है, फिल्टर के लिए इफ आई वांट टू अप्लाई फिल्टर देयर तो व्हाट वी नीड टू प्रेस ओनली 5. और क्या हुआ, हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया.
तो ओल्ड क्या देता है कि हमें नंबर देता है। अब मुझे फाइल के अंदर देखना है कि फाइल के अंदर क्या क्या विजिबल है, तो मैं जब F प्रेस करूंगी, प्रेस F, तो फाइल में क्या होगा, हमारा फाइल हमें क्या होगी, हमें वेलकम स्क्रीन पे ले आएगी। तो ओल्ड के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा में वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ओल्ड क्या करता है कि हमें लेटर्स और नंबर्स ऑफर करता है, जिन के सिंगल टैप से हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने डाटा में मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ वी कवर शॉर्टकट्स रिगार्डिंग द डेट। These shortcuts are for navigation. If I select, see, अगर बहुत बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत बार क्या, मोस्टली 99% क्या होता है कि अगर हम कोई भी अपना एक्सेल सीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें क्लाइंट का या हमारे सीनियर का रिक्वायरमेंट होता है कि डेट के साथ हमारा वो सीट प्रिपेयर होना चाहिए। तो डेट के लिए हमारे पास मोस्टली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि इज इक्वल टू, जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हम इज इक्वल टू साइन के साथ करते हैं। तो टुडे वर्क फॉर डेट, व्हेन आई क्लिक हिट ऑन एंटर, so what is today's date, 30th April 2024, but Ma'am, your voice is breaking. Hi guys, actually it's facing some network issue, I guess. Just wait for 2 minutes, okay? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, just wait for 2 minutes, okay? Okay, ma'am. Yeah. guys, I am audible or not? Please. Yes, ma'am. Now you are audible. If I am audible. Yes, ma'am. Yes, You're ma'am. audible. Okay, okay, sorry for disturbance due to the power cut. I will share my screen once again. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay, here we see date function with the help of formulas, but my requirement is different. I want static date, not dynamically, but with the formulas we got dynamically date. So here we have one dynamical one static hard coded shortcut. Press control plus semicolon. Control plus semicolon. It's work for date, current date. What you need to press control plus semicolon. Got it? Yes, ma'am. With the help of control plus semicolon, you will get today's date. It's not dynamically because it's hard coded. It's not formula, it is hard coded. So if you check tomorrow, it will be 30th April 2024. These shortcuts fulfill my boss requirement also.
Now my boss what want? They want time also, or also time in static form. For time, what we need to press control plus shift, control plus shift plus semicolon, and you got current time. What is current time? 4:28. 4:28. So that's how you got the current date and current time. And if one time future when you work in real industry. If we are talking about formatting date function, so see, this is date function, date format. If I change it in number format, now it is in number format. But if I want to do this with the help of shortcut, so control plus shift plus 3, what it will do? It will convert number date into number. See, this is date. If I press control shift plus 3, sorry, it is hard coding. So control 1. Control 1 is for date formatting. For date formatting, we use control plus 1. So here I choose date formatting. I choose this format and hit on OK. So this is control 1 is for date formatting, and control plus shift plus 3 convert number to date. नंबर को किसमें कन्वर्ट करता है? डेट फंक्शन में. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3. So this is our date function. And control plus 1 is working for customized date format. So now I think now we are good to go. Our next module. This is sort filter subtotal. Till now, if you have any doubt, please unmute yourself and let me know if you have any doubt. Ma'am, Yes. can you explain that date and time one? Okay. Okay. Please ask me whenever you feel down, unmute yourself and let me know कि मैम मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर करो. तो देखो, डेट फंक्शन के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं. फॉर्मूलाज में करंट डेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे. When we hit on enter, we got today's date, but it is dynamically, not static. But my boss requirement is what they want कि अगर 30 अप्रैल का डाटा है तो उसमें 30 अप्रैल का ही डेट क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, ना कि डायनेमिकली होना चाहिए कि कल अगर हम उस सीट को ओपन करें तो वो 31 हो जाए या 1 हो जाए. तो उसके लिए हमारे पास एक हार्ड कोडेड फॉर्मूला या शॉर्टकट हम बोल सकते हैं. क्या होता है कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन. व्हेन वी प्रेस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इट गिव्स अस करंट डेट. कंट्रोल प्लस सेमीकोलन. आई रिपीट अगेन. एंड फॉर टाइम, अब मुझे सीट के साथ टाइम का भी रिक्वायरमेंट है कि किस टाइम पे वो सीट मेरा रेडी हुआ. तो टाइम के लिए क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन. दिस टाइम वी आल्सो नीड टू प्रेस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन फॉर टाइम, एंड कंट्रोल प्लस सेमीकोलन फॉर डेट. एंड इफ I want this in timestamp format. So what you do? First of all, press control plus semicolon, give space, and again press control plus shift plus semicolon. This is our timestamp for our sheet. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now we are moved to our next module. Sort, filter, and subtotal.
I know many of you are very well aware about this sort and filter, not because of this Excel, but because of the e-commerce website. ई-कॉमर्स वेबसाइट को हर कोई यूज करता है. ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक मिंत्रा, मीशो, बिग बास्केट, हर कोई यूज करता है अपनी डेली लाइफ में. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. और वहां पे हमारे पास क्या होता है कि फिल्टर सेक्शन अवेलेबल होता है कि अगर मुझे ब्लैक शर्ट का रिक्वायरमेंट है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या करूंगी, फिल्टर सेक्शन में जाऊंगी. वहां पे 3-4 कैटेगरी होती है, साइज, कलर, प्राइस. तो मैं कलर में जाके क्या सिलेक्ट करूंगी, ब्लैक कलर की. मुझे ब्लैक कलर का ही शर्ट चाहिए. जब मैंने सिर्फ कलर पे अपना फिल्टर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि मेरे पास आउट ऑफ 10,000 स्टॉक क्या हुआ कि 2500 का क्या हो गया कि स्टॉक मुझे दिखा रहे हैं कि ब्लैक कलर में हमारे पास ये क्या है, अवेलेबल है. बट आई एम लुकिंग फॉर शर्ट. तो मैं वहां पे स्टाइल सेक्शन में जाके, अब वहां स्टाइल सेक्शन में क्या होगा, कुर्ता अवेलेबल होगा, पैंट अवेलेबल होगी, ड्रेसेस अवेलेबल होंगी, शर्ट अवेलेबल होंगी. तो उसमें से जाके मैं क्या करूंगी, अब मुझे चाहिए शर्ट तो मैं क्या करूंगी, फिल्टर में जाके फिल्टर अप्लाई कर दूंगी कि मुझे शर्ट के मैं आई एम लुकिंग फॉर शर्ट. तो अब मुझे क्या होगा कि शर्ट में भी आउट ऑफ 2500 में भी 100 to 100 ऑप्शन मिलेगा ब्लैक शर्ट के लिए. उसमें किसी का फैब्रिक डिफरेंस होगा, साइज डिफरेंस होगा. तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में अपनी डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन को यूज करते हैं. एवरीवन इज फैमिलियर विद फिल्टर फंक्शन. सेम थिंग वी perform in Excel. I use this type of example for your basic understanding. In actual, what is sort and filter? Now everyone easily relate how sort and filter works in Excel. If you want to find specific thing, you use filter in same way we used in e-commerce website, right? Here we have data. In first column we have state data, in second column we have region data, and in third one we have sales data. Now what I do, I represent this data to my manager and senior. They ask me, we want sales revenue for only south region. अब बॉस का तो रिक्वायरमेंट है कि सेल्स चाहिए बट साउथ रीजन के लिए चाहिए. बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साउथ है, रीजन में वेस्ट है, सेंट्रल है. तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें फिल्टर यूज करना होगा. बट जैसा मैंने आपको बताया, जब भी हम एक्सेल की किसी भी न्यू सीट पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें वहां पे क्या करना होता है, क्लीनिंग पार्ट कवर करना होता है. क्या करना होता है, क्लीनिंग. तो यहाँ आपको दिख रहा है कि हमारे पास ब्लैंक रोज है. तो सिलेक्ट एनी सेल इन योर डाटा एंड प्रेस Ctrl+G. Here one pop-up is came on my screen. In this pop-up, one dialog box is there, special. I am looking for blanks. Click on blanks. Click OK. Now Excel is smart enough. उसने क्या किया कि रो को एंड जो ब्लैंक कॉलम था उसको क्या किया, सिलेक्ट किया. देन आई प्रेस Ctrl- फॉर डिलीट. अब ये पूछ रहा है कि शिफ्ट को लेफ्ट, जो सेल्स है उनको लेफ्ट में शिफ्ट करना है या सेल्स को शिफ्ट करना है अप. तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल्स अप, कि जो भी मेरा रो डिलीट होगा उसके ऊपर क्या होगा कि मेरा डाटा आ जाएगा. ओके. सो अभी क्या हुआ कि हमारा डाटा के बीच में से क्या हुआ कि ब्लैंक रोज क्या हो गई, डिलीट हो गई. अभी तो अभी मुझे फिल्टर अप्लाई करना है. तो फिल्टर के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L. और एक मैंने आपको दूसरा भी मैंने आपको बताया कि जब हम, मुझे नहीं पता कि एक्सेल में कौन सा टैब, कौन सा फंक्शन कहाँ प्रेजेंट है, तो सिंपली क्लिक ऑन Alt. व्हेन यू प्रेस Alt, you got all the letters numbers there. तो F के अंदर फाइल, होम, एंड, और हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में भी क्या है, फिल्टर ऐड है, फिल्टर कमांड ऐड है. तो मैं एक, तो मेरे पास ये वे है कि मैं Alt प्रेस करके 5 प्रेस कर दूं
और मेरे पास क्या हो जाएगा, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा मेरे डाटा में। दूसरा मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। सी ऑन माय स्क्रीन when my cursor is on filter tab, filter icon, so this is showing filter control shift L for filter. सो अभी हमने कितने वे देखे फिल्टर अप्लाई करने के लिए, क्या देखा, ऑल्ट की हेल्प से भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बट उसका जनरल अप्रोच क्या है, जनरल अप्रोच है अंडर होम टैब you got the editing option. Here you are able to find sort and filter function. Click on it and here you got filter. So तीन तरीके से हमने क्या देखा, तीन पे देखे हमने कि हम अपने डाटा में फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर कॉलम हेडर and press Ctrl Shift L because we are talking about shortcuts. तो कंट्रोल शिफ्ट हेल्प की हेल्प से मैंने क्या किया, अपने डाटा में फिल्टर अप्लाई किया। यहाँ पे आप सबको एक चीज नोट करने की नीड है। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन ऑलवेज अप्लाई फिल्टर ऑन योर हेडर because sometimes what happen, people select mid part of the data and apply filter. Now it is showing data but not cover all data. क्या करते हैं, देखो मैं अभी अपने फिल्टर को क्या करती हूँ, रिमूव करती हूँ और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस, सॉरी क्या किया, मैंने अपने इनको यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गई और मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरा फिल्टर अप्लाई हो गया बट मेरे फिल्टर में अब जो ऊपर का पार्ट है, जो ये 9 रो है, ये मेरे इस डाटा में कवर नहीं होंगे क्योंकि मेरा फिल्टर जो लगा है वो 10th रो पे लगा है, जो 10th के नीचे जो पार्ट है वहां पे मेरा ये फिल्टर वर्क करेगा, ना कि अपर पार्ट में। सो नेवर डू दिस मिस्टेक इन योर कंपनी और इंडस्ट्री लाइफ। So remove the filter and always select your column header. Whenever you want to apply filter, always select your column header. Now we are back to our question, which my manager asked me. Sales revenue for South region. अब बॉस का रिक्वायरमेंट क्या था कि मुझे सेल्स का रेवेन्यू चाहिए साउथ रीजन के लिए। अब मेरे डाटा पे फिल्टर अप्लाई है तो मैं क्या करूंगी, सबको अनसिलेक्ट करूंगी और साउथ को क्या करूंगी, सिलेक्ट कर दूंगी और क्लिक ऑन ओके। अभी क्या दिख रहा है, अभी सारा जो डाटा है वो साउथ रीजन के लिए दिख रहा है। तो बॉस का ये रिक्वायरमेंट क्या हुआ, फुलफिल हुआ। Now what happened, someone told me after the region selection in south we only want Florida state, कि ठीक है साउथ का तो आ गया पर साउथ भी काफी बड़ा एरिया है, तो साउथ के अंदर हमें सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट का क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो आई select all the data and select only Florida one and click on OK. अब मैंने फ्लोरिडा सिलेक्ट किया तो अब मेरे पास क्या है कि साउथ रीजन के फ्लोरिडा स्टेट का सारा सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। और जब भी आपको मल्टीपल कॉलम्स पे फिल्टर अप्लाई कराना होगा तो आपको जितने भी आपके कॉलम्स पे फिल्टर अप्लाई करना उन सभी के हेडर्स को एक साथ सिलेक्ट करके और आप किसी भी वे से ऑल्ट की हेल्प से या फिर शॉर्टकट की हेल्प से या फिर जो जनरल अप्रोच है अंडर होम टैब के अंदर जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आप फिल्टर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे अपना क्या करना है कि फिल्टर अप्लाई करना है और अब मुझे फिल्टर रिमूव करना है तो क्या होगा कि अब मैंने इन दो कॉलम पे क्या किया, फिल्टर अप्लाई किया, मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट थी बट अब मेरे बॉस को इसका मैंने कॉपी सेंड कर दिया। अब मुझे ये फिल्टर नहीं चाहिए, मुझे क्लियर करना है फिल्टर। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे सारे कॉलम से रिमूव करना है तो उसके लिए हमें या तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दूं
या फिर मैं यहाँ पे आके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर क्या कर दूं, क्लियर फिल्टर। सी माय फिल्टर इज रिमूव फ्रॉम ऑल द कॉलम्स। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे जैसे कि मैं फिर से एक बार दोनों कॉलम्स पे, अब अभी तो क्या हुआ कि हमने सारे मल्टीपल कॉलम से फिल्टर को रिमूव किया, बट कई बार रिक्वायरमेंट ऐसा भी होगा कि नहीं मुझे मल्टीपल कॉलम से नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम से अपने फिल्टर को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उस कॉलम पे जाके राइट क्लिक करना होगा फिल्टर आइकन पे एंड क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? No, No, ma'am. ma'am. समझ आ रहा है, जितना भी हमने अब तक कवर किया वो समझ आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. सबको क्लास के बाद ये Yes, डाटा ma'am, आ रहा। सबको ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सबको क्या करना है कि प्रैक्टिकली भी करना है, एक्सेल देखने से नहीं आएगा, देखने पर सबको लगेगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत सारे एरर इश्यू आएंगे जो आप फेस करोगे, और जब वो एरर आप फेस करोगे तभी एक्चुअल में क्या होगा, आप सीखोगे कि उन इश्यू से ओवरकम आपको कैसे करना होगा। नाउ फिल्टर इज बीइंग रिमूव, दिस इज till here this is very basic concept of Excel. Here we cover basic filter function. When we talk about filter, they see, I told you also very important topic there. फिल्टर अप्लाई किया। अब हमारे पास फिल्टर का कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है, क्योंकि हमारे पास डाटा यहाँ पे कितने टाइप्स का है आपको दिख रहा होगा। हमारे पास स्टेट में जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्मेट का है, टेक्स्ट फॉर्मेट। रीजन में जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट। और जो सेल्स में हमारे पास डाटा है वो किस फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट। तो हमारे पास फिल्टर भी 2 टाइप्स के हैं, टेक्स्ट फिल्टर एंड एज वेल एज नंबर फिल्टर। सो वी आर एक्सप्लोर वन बाय वन। Here in text filter, when you click on filter tab, filter icon, you got this text filter option. And when you click on text filter, here one pop-up is came with different 7 to 8 option. Is equal to, does not equal to, begins with, ends with, contains, does not contain, and custom filter. We explore everyone one by one. When I click on equal, see what it will do. अगर मुझे सिर्फ डाटा चाहिए कि कैलिफोर्निया का मुझे डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टेट में जाके इज इक्वल टू के आगे क्या लिख दूंगी, कैलिफोर्निया टाइप कर दूंगी, कैलिफोर्निया। कि मेरा, मुझे देखो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है शो रोज वेयर स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको पास यहाँ पे आपको क्या है कि आपको कंडीशन भी मिली है एंड, कि मुझे दूसरा क्या चाहिए, डज नॉट इक्वल टू चाहिए, कि मुझे एक मैंने इज इक्वल टू किया कि इक्वल टू कैलिफोर्निया होना चाहिए, और मुझे वो डाटा बिल्कुल नहीं चाहिए जो इसके इक्वल ना हो। तो हम कंडीशंस बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल कवर करेंगे। तो मैंने कैलिफोर्निया सिलेक्ट किया स्टेट में, ओके। 1 minute। Under tax tag is equal to sign,
इज इक्वल टू, स्टेट किसके इक्वल टू होना चाहिए, कैलिफोर्निया हमने टाइप किया था, कैलिफोर्निया। ओके, तो अभी क्या हुआ कि मुझे सिर्फ मेरा वो डाटा यहाँ पे विजिबल है जो स्टेट कैलिफोर्निया है, सिर्फ कैलिफोर्निया, क्योंकि मैंने अपने फिल्टर में कौन सा फिल्टर यूज किया, इज इक्वल टू, कि कैलिफोर्निया के इक्वल है तो मुझे वो डाटा चाहिए वरना नहीं चाहिए। अब हमारे पास डज नॉट इक्वल टू आता है, तो इसको पहले वहां से हम उस फिल्टर को रिमूव करेंगे, देन वी अप्लाई नेक्स्ट फिल्टर। This time we are apply on reason section because both columns are in text format. तो does not equal to, अब मुझे चाहिए कि रीजन मेरा, मुझे वो डाटा नहीं देखना जो मेरा वेस्ट के इक्वल है। कौन से रीजन के इक्वल है, वेस्ट रीजन के इक्वल है, वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो सी, अब मुझे साउथ के लिए मेरा डाटा विजिबल है, सेंट्रल के लिए विजिबल है, ईस्ट के लिए विजिबल है, बट आई एम नॉट एबल टू सी my west data because I apply filter on my west region. So this is how does not equal to function work. Now first of all remove your first filter, then apply second filter. Begins with कि मुझे सिर्फ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने क्लास डाटा का, कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्लास में जो सेम नेम के होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार में उन सभी का रिपोर्ट प्रिपेयर कर दूं, या फिर हम ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम टाइम पे अल्फाबेटिकली सब कुछ सिलेक्ट होता है, तो मुझे वो वाले क्या चाहिए, वो वाला पैटर्न चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे वो डाटा चाहिए जो के से स्टार्ट हो, स्टार्ट विद के, और प्रेस ऑन ओके। तो के सी, देखो यहाँ पे केंटुकी है, फिर अदर स्टेट ऑल्सो देयर बिकॉज दिस स्टेट ऑल्सो स्टार्ट विद के। तो जितना भी आपके पास आपके डाटा में के, जो डाटा के से स्टार्ट हो रहा है वो आपको क्या होगा, विजिबल होगा जब आप बिगिंस विद का फिल्टर अप्लाई करेंगे। नाउ एंड्स विद, कि मुझे वो चाहिए जो इनके साथ, अब जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो नाम चाहिए जो लास्ट में एन से क्या हो रहे हो, एंड हो रहे हो। तो ओके, तो अब देखो विस्कॉन्सिन और भी बहुत से डाटा होंगे। यहाँ पे हमारे डाटा में सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जो इनके साथ क्या है, एंड हो रहा है। तो काफी टाइम क्या होता है कि जो कंटेन्स एंड डज नॉट कंटेन्स, पीपल्स क्या करते हैं कि उनको सिमिलर क्या करते हैं कि कंटेन और इक्वल और डज नॉट कंटेन और डज नॉट इक्वल टू आर सिमिलर टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। जब आप इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो इक्वल में आपका क्या होता है कि अगर इक्वल में मैंने मेंशन किया कि मुझे, मैं आपको एक इक्वल में अगर मैंने सी नॉर्थ लिखा, तो वो आपको अगर जहां पे सिर्फ नॉर्थ है, अगर आपके सेल में सिर्फ नॉर्थ होगा तो ही आपको वो डाटा विजिबल होगा, बट कंटेन में ऐसा नहीं है। कंटेन में मैं आपको शायद इसमें हमारे पास वो डाटा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। सी नॉर्थ, यहाँ पे है नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पे न्यूयॉर्क, तो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करती हूँ कि एन से स्टार्ट, पर एन से स्टार्ट नहीं, आई विल चेक इन फिल्टर सेक्शन। यहाँ पे देखो नॉर्थ से स्टार्ट होने वाली टू स्टेट है, तो अगर मैं इज इक्वल टू में नॉर्थ टाइप करूंगी तो वो सिर्फ मुझे वो स्टेट देगा जो सिर्फ नॉर्थ है, ये दो स्टेट्स को कवर नहीं करेगा, बट कंटेन फिल्टर क्या करेगा, इनको कवर करेगा। सी हाउ कंटेन्स वर्क। अब मुझे वो डाटा चाहिए जिसमें नॉर्थ अवेलेबल है, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए जहां पे नॉर्थ अवेलेबल है। ओके,
तो देखो नॉर्थ कैरोलिना, when I scroll down, ओ रीजन स्टेट पे भी फिल्टर लगा है क्या? नो, बट व्हाई दिस इज नॉट कम? कैलिफोर्निया व्हाई नॉट कमिंग? We do again. First of all, remove all the filters from there. Okay. Now we apply filter for north. क्या कंटेन करना है? नॉर्थ, जितने भी स्टेट में नॉर्थ है कंटेन्स नॉर्थ। हमारे डाटा में था ना नॉर्थ कैलिफोर्निया में, एक बार फिर से चेक करती हूँ कि डाटा में नॉर्थ कैलिफोर्निया है या नहीं। कैलिफोर्निया है, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ डाकोटा है, तो ओके। कंटेन्स नॉर्थ, क्लिक ऑन ओके। I think some issue is there in this function right now. मैम इसमें Yes, है नॉर्थ डाकोटा लिखा है बीच। sorry, but I am not able to see. नहीं मैम, Wait. धीरे धीरे स्क्रॉल करो, बीच में था। Oh, yes, 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 yes. Here we have North Dakota also. Everyone got it? यस मैम। मुझे लगा सिस्टम में Yes, कोई ma'am. इशू होगा तब ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, बट फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। तो आपको समझ आया इज इक्वल टू और कंटेन में क्या फर्क है? अगर इज इक्वल टू में मैं नॉर्थ मेंशन करूंगी तो वो सिर्फ उस स्टेट को इंक्लूड करेगा जो सिर्फ सेल के अंदर क्या हो, नॉर्थ हो। अगर मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया करूंगी तो वो सिर्फ, मैं आपको दिखाती हूँ, नॉर्थ अगर हम वहां पे लिखते हैं नॉर्थ कैरोलिना तो वो सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना को ही कवर करेगा। Hello. Yes. The interruption now. But we have the another class at 5. Sorry, I am not able to hear you clearly. Please speak little bit loud. Ma'am, actually we have the another class in the same meeting link, so we have to like wind up this session. Okay, okay, Mandira, give me 2 minutes. Yeah, sure. Okay, thanks for reminder. Okay, see, if I in equal to M wrote North Carolina and click on OK. This time only North Carolina state is there. See, हमको कहीं भी वो नहीं मिलेगा क्योंकि इस टाइम हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है? टैक्स इज इक्वल टू फंक्शन यूज किया कि अगर उसके बराबर है तो हमें डाटा विजुअलाइज करेगा, वरना नहीं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन contain function and is equal to function. So till here everyone got it? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, we will cover number filter and subtotal function in our next class. If you have any doubt, please unmute yourself and let me know. If you have no doubt, so we wind up our session here because we have our next class. No doubt? नो मैम। No, ma'am. Okay. Thank you everyone. We will connect on next class and then we cover our very important formula, subtotal formula, and we also cover remaining part of filter function, as well as if time permits we cover sorting as well. Right. Okay, bye everyone.